We have already seen how British manufacturers took over the Indian market and how it affected the Indian weavers and craftsmen, traders, and later on how industrialists resisted colonial controls. And even in nationalism in India, we have seen after the First World War, Indian merchants and industrialists started demanding tariff protection from British imports and created their own spaces and organization and tried to expand the market for their produce. But this is something we have also done in class 8. Class 8 ke I guess civics mein hum karte hain, ya economics, not in economics but civics. How consumers are persuaded to produce buy their goods. We have also discussed this many times in class that one of the ways advertisement. Okay, so why do we see advertisements all around us? So the product appears desirable and necessary. It is done to shape the minds of the people that they need that product. They cannot live without that product. Today we live in a world where advertisements surround us. आप हर जगह advertisements देखते हो, whether it is newspaper, whether you are watching TV, magazines, on hoardings, street walls, television screens. But let's look back into the history that it began with the coming of the industrial age. पहले advertisements नहीं होती थी. People used to go by their names or they used to go by the quality कि भैया इसके पास जाना, इसके पास सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा. So advertisement was done by the word of mouth. Even today it is one of the most important source of advertisement कि अगर आपकी किसी ने मुंह से तारीफ कर दी ना, जैसे for example in your case I can tell you that you would have heard that if you want to study science or physics, go to this sir, he is the best teacher of science. तो भाई चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, but because someone is saying who has already studied from that teacher, you obviously go for tuitions for that teacher. But let's see how in advertisements came along with industrialization and what role did they play in expanding the market for products and in shaping a new consumer culture. So जब मैनचेस्टर ने इंडिया में अपना सामान बेचना शुरू किया, they started putting labels on the cloth bundles. The label was done so that you could get to know where this product is manufactured, कहाँ पे बना हुआ है. और made in Manchester का मतलब ये होता था कि उसकी quality A1 होगी. Made in Manchester used to be a symbol that it is a quality product. Written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. यही चीज अभी हम उसके साथ कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया कैंपेन. Yes, sir. हाँ, but labels did not only carry words and text. अगर आप देखोगे तो लेबल पे सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट नहीं होते, उन पे इमेजेस भी होती है, which are very often beautifully illustrated. तो इन अगर आप इन लेबल्स को देखोगे, जैसे दिस इज वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर कीप्स बेबी वेल, बच्चों की घुट्टी है, इसमें कृष्णा जी दिखाए गए हैं. हियर यू कैन सी दैट Indian gods and goddesses are shown in the imported cloth labels. Here Maharaja Ranjit Singh is shown on a Manchester label. This is Sunlight soap where Vishnu is seen with riding on the Garuda with his two wives. Okay, so this, all of this is done to appeal to the mind of the people, though they are saying that this product is manufactured in or made in Manchester, but still they have to appeal to the Indian masses. तो इंडियन मासेस को अपील करने के लिए इमेज तो इंडियन होनी चाहिए. So images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels so that they will approve it.
The image of Krishna or Saraswati was intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. साथ ही साथ by the late 19th century they started manufacturing calendars to popularize their products. पुराने जमाने में हम सब ने अपने घर में देखा होगा ना, एक कैलेंडर होता है जिसमें शिव जी हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या विष्णु हो सकते हैं लक्ष्मी जी और अपनी फैमिली के साथ, और नीचे उसमें किसी दुकानदार का नाम लिखा होता है, उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं. देखा है कुछ ऐसे कैलेंडर्स? Yes, sir. हाँ, हम सभी के घरों में होते थे. सो ये आप ट्रेंड देखो, that this trend started from during the time of the Britishers. And calendars क्यों यूज होते थे? Because if some people could not even read newspaper and magazines, तो कैलेंडर में डेट तो देखेंगे, तो वो दुकानों में टांग दिए जाते थे, चाय की दुकानों में, या गरीब लोग अपने घर में टांग लेते थे, एज वेल एज इन ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स, क्योंकि डेट तो सबको देखनी है. तो अगर आप डेट देखोगे और वो वहां पे टंगा हुआ है पूरे एक साल के लिए, सो यू विल कम अक्रॉस द मैन्युफैक्चरर्स नेम और द एडवर्टाइजमेंट डे आफ्टर डे थ्रू आउट द ईयर. Okay, and the pictures and images of gods are being used to sell new product. इसके अलावा, like the images of god, figure of important personages like emperors and nawabs were also used to pay respect to them and respect the product. अगर देखो किसी पे जैसे महाराजा रंजीत सिंह बने हुए हैं किसी चीज के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप उस प्रोडक्ट को कूड़े में या ऐसे उसके लेबल को फेंकोगे नहीं, क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह है. ओके. Similarly, the message was to pay respect to the royal figure and respect the product. And the quality of the product could not be questioned. और जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपना सामान बनाना शुरू किया, तो उन्होंने नेशनलिस्ट इमेजेस यूज करना शुरू कर दी. जैसे कि हियर यू कैन सी एक इंडियन मिल का बना हुआ कपड़ा है, और आई गेस दिस इज अ गुजराती, यस, अहमदाबाद मिल में बना हुआ कपड़ा है. आप उसमें देख सकते हो उसने जो इमेज यूज की है वो किसकी की है? What is the image used here? Or who can you see in the image? Yes. Sir, Bharat Mata. Yes, भारत माता. ये इंडियन गॉडेसेस जैसी लग रही है, बट दिस इज अ स्वदेशी थीम दैट इन भारत माता जो है अपने लोगों को कपड़ा दे रही है. और इसके ऊपर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऊंचो माल. ऊंचो माल क्या हो गया? High quality. यस, हाई क्वालिटी. एंड यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में बनेलो माल. तो गुजराती है, पर वो बोल रहे हैं कि ये जो माल है वो कहाँ पे बना है? Made in India. यस, मेड इन इंडिया. और यहाँ नीचे लिखा हुआ है हिंद देवी. ठीक है, हियर यू कैन सी एट द बॉटम, राइट एट द बॉटम, हिंद देवी, और उसमें दिया हुआ है अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड. और इस तरफ लिखा हुआ है रणछोड़लाल धोलालाल एंड कंपनी. उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम भी दिया हुआ है जिसकी कंपनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है उस कंपनी का नाम, कि ये इस कंपनी का नाम है अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड. ओके. सो clearly the age of industries has meant major technological changes, which we have already seen. The growth of factories and how it impacted the people, working class, the making of a new industrial labor force. Isiliye, when we were doing Europe, I taught you that apart from the aristocrats and the peasants, there were the middle class, and with the industrialization comes in which new social group emerged? Middle class. No. Classes. Yes, working class. So, however, as you have seen, hand technology and small scale production
अभी भी एक important part रहेगा. With the coming of factories doesn't mean that hand labor या handmade production बिल्कुल खत्म हो गया. आज भी इंडिया में अगर आप ट्रैवल करोगे, you will find that in many places weaving is done by hand. So